Let's get started. In the last session we saw we have downloaded and installed the Oracle database, right? So let's create the table inside Oracle. Okay, ये सेम ही है Oracle में या फिर आप Postgres में टेबल क्रिएट करो, लगभग सेम ही है. ठीक है, create table, table name I want, let's see, emp. ठीक है, let me have few records, few columns into it, id, name, salary and dbt. id is of type, let's say, number, name varchar, $20, number for salary, varchar 20 for dbt. Let's create this table, run this query. Table is got created. Let's insert the records. Insert into emp values 101, name Ajay, salary 15,000, he is into IT department. Run this query. Insertion, first record 102, Vijay, 25,000 salary, he is into HR department. Let me run this. Am I clearly audible, everyone? Yes, sir, you are. Okay. Select star from emp. And whoever is contacting to the HR, right, tell them that your package is around 5 or 5.5 and expected you can put it as 10. We have these two records in emp table. Okay, we have a shortcut here to commit the data if we insert or do any changes into the database. What is the use case of commit? We already discussed in the initial सेशंस ऑफ एसक्यूएल. कमिट से डेटा हम लोग परमानेंटली सेव करते हैं. ठीक है, नाउ वी वर लुकिंग इनटू अ कंपोनेंट कॉल्ड TDB इनपुट और T Oracle इनपुट. लेट्स से कोई भी डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस है, लाइक पोस्टग्रेस है, रेडशिफ्ट है, स्नोफ्लेक है, Oracle है, MySQL, SQL सर्वर, टेराडेटा, एनी डेटाबेस. सारे डेटाबेस के लिए इनपुट कंपोनेंट क्या रहेगा? TDB Oracle इनपुट, TDB Postgres SQL, TDB Redshift. सिर्फ TDB आपका डेटाबेस नेम एंड देन इनपुट. ठीक है, अभी के लिए ये TDB इनपुट दिख रहा है. वंस यू कन्फिगर इट विथ Oracle, इट विल बी T Oracle इनपुट. ठीक है, नाउ इट इज Oracle डेटाबेस. ओके, नाउ वी हैव फ्यू प्रॉपर्टीज टू सेट हियर. ओके, हमने कुछ सेटिंग्स की थी Oracle को कनेक्ट करते वक्त. होस्ट नेम वी हैव गिवन, राइट. होस्ट नेम देना है हमें लोकल होस्ट. पोर्ट नंबर इज 1521, इट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर. डेटाबेस इज XE. यूजर नेम इज सिस्टम, एज आई यस्टरडे टोल्ड यू, सिस्टम. पासवर्ड इज in double quotes I am giving 1 2 3. password दे रहा हूँ मैं. click on OK. Okay, all the settings are done now, right? So what table I am going to read now, that is emp table. Table name I can give here emp. okay, यहाँ पे हम लोग schema रख सकते हैं, यहाँ पे edit करके, या फिर you can write your own query and guess the schema. let's say select star from emp. If you check the schema, there is no columns here, right? I can guess the schema to get this schema, or else I can give the schema manually by adding the column. जैसे हमने फाइल इनपुट में किया था डिलिमिटेड में, हमने मैनुअली सारे कॉलम्स क्रिएट किए थे, राइट. So similarly we can do that manually here as well. And also we have options like guess schema or guess query. What are these options are? Let's see. Guess schema, if you write the query
यू कैन गेस दी स्कीमा. इट मीन्स उसके जितने भी कॉलम्स हैं, जैसे आपने क्वेरी लिखा है वैसे ही सारे कॉलम्स यहाँ पे स्कीमा में आ जाएंगे. लेट मी गेस द स्कीमा. I just clicked on OK. Operation in progress. See, ये सारे कॉलम्स अपने कहाँ पे हैं? EMP टेबल में, राइट? So I can click on OK. But before clicking on OK, we have to take some precautions here for few data types. Oracle के साथ big decimal won't work here. So यहाँ पे भी है integer या फिर float decimal, जो भी आपको related data type है that you can select here. Let me click on OK. Right. So now we are done with schema creation. You can see the schema is created here, right? Let me save this. Now the configuration of T Oracle input component is done here. Let me try to load this data into log row. It means console पे मुझे उसको डिस्प्ले करना है. Right click रो मेन एंड कनेक्ट टू टी लॉग रो. सिंक कॉलम कर सकते हैं, राइट? गो टू रन टाइम, क्लियर एंड रन. टेबल में अपने 2 रिकॉर्ड्स थे ओरेकल टेबल में, EMP टेबल में. दैट शुड बी डिस्प्लेड हियर. सी दोज 2 records we can see here. मतलब we can able to read the data from Oracle database or any other databases. आपको related configurations यहाँ पे मेंशन करने आने चाहिए, राइट? सो आई कैन एबल टू रीड द डेटा फ्रॉम EMP टेबल. लेट्स से आई डोंट वांटेड टू गेट ऑल द कॉलम्स हियर. ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टार व्हाट आई वांटेड टू राइट, सेलेक्ट ID, कॉमा नेम, कॉमा सैलरी. 3 ही कॉलम चाहिए. लेट्स गेस द स्कीमा. अगेन ऑपरेशन इन प्रोग्रेस. देन it will suggest you all those columns which you have added into a query. According to query it will guess this schema. Okay, clicking on OK. Would you like to propagate the changes? हमने यहाँ पे changes किए हैं. You wanted to propagate the changes into further components? लेट्स से यस. अगर यस करूँगा तो टी लॉग रो में भी वो सारे चेंजेस हो जाएंगे. मतलब वो सारे कॉलम्स चेंज हो जाएंगे. ID नेम सैलरी डिपार्टमेंट भी था वो एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमने क्वेरी चेंज की है एंड वी आर डूइंग गेस स्कीमा हियर. ओके, लेट्स गो टू रन टैब, क्लियर एंड रन. लेट्स चेक. वी गॉट द डेटा फॉर ओनली 3 columns now. That's the use of guessing schema. According to the query you can guess the schema. You can write any type of query like joins or anything else. You can write it here to read the data and process that data to the next component. Okay, only select statements you can write. You cannot execute any statements apart from select, which is not able to bring the data to the कंपोनेंट. कंपोनेंट में सिर्फ वही डेटा, वही क्वेरीज चलेंगे जो डेटा फेच करके लेके आएगा. दैट इज ओनली सेलेक्ट स्टेटमेंट. आपका क्रिएट स्टेटमेंट, अल्टर स्टेटमेंट लाइक टेबल क्रिएशन, ड्रॉपिंग, दोज क्वेरीज वोंट बी executed here into this component. This is how we can read the data by using TDB input. Now instead of displaying only onto the console, I wanted to load the data into Oracle. T Oracle output. T Oracle output. T Oracle output component I want. From T log row I wanted to connect it to T Oracle output. ठीक है, सेम सेटिंग्स मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे. लोकल होस्ट
database is xe, username system password 123. Click on OK. What table I wanted to create, what table I wanted to load the data, emp_cp, ऐसे कुछ टेबल मुझे बनाना है या फिर जो टेबल एग्जिस्टिंग है उसमें डेटा लोड करना है. अभी ये emp_cp टेबल तो अवेलेबल नहीं है टारगेट में, मतलब डेटाबेस में. चेक करते हैं हम लोग. select star from emp_cp. See, we don't have this table now. I wanted to create that table, but I don't wanted to create it from the Oracle database. मतलब वहाँ पे डेटाबेस में क्रिएट नहीं करना है, यहीं से मुझे क्रिएटेड टेबल चाहिए. एक्शन ऑन टेबल, create table if does not exist, drop and create table, drop table if exist and create clear table, truncate table with reuse storage. So यहाँ इसमें से required option हम लोग यूज़ कर सकते हैं. create table if does not exist, I wanted to create the table अगर टेबल अवेलेबल नहीं है तो. एक्शन ऑन द डेटा, मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, जो सोर्स से मैं उठा के लेके आ रहा हूँ इधर से, वो डेटा मुझे इंसर्ट करना है. ओके, दीज आर दी ओनली स्टफ आई वांटेड टू डू. अभी यहाँ पे स्कीमा भी तो सेम होना चाहिए, राइट. 3 कॉलम मेरे सोर्स से आ रहे हैं, 3 कॉलम मुझे टारगेट में क्रिएट करवाना पड़ेगा, राइट. सिंक कॉलम्स, गो टू रन टैब, क्लियर एंड रन. डेटा यहाँ से रीड हुआ, tlog row displayed these records which are coming from source. वही 2 records टारगेट के लिए गए हैं. Let's check whether that table is got created and records are got inserted or not. See, records are there with only 3 columns. Okay, this is how we can use tdb input or tdb output. It will be for any specific databases like Oracle, any databases. You can search those components and you can read the data from any databases, and you can write the data into any of the databases, and the required settings you can do it in the component itself. So now few of the options are there which I didn't introduce to you. Like here, if you have any other database like SQL Server or any other database, you can choose that database and you can apply, and according to that database the properties will be getting changed, जिसमें उस database related के जो भी properties है those will be displayed here. According to that database the component will work. Okay, this is here, right. अभी ये Oracle है, that's why here it is Oracle. Use an existing connection, this is an option. ये ऑप्शन क्या है, हम लोग एक कनेक्शन बना के रख सकते हैं और द सेम कनेक्शन वी कैन यूज़ इन द जॉब. ओके, लेट्स से आई हैव मल्टीपल डेटाबेस कंपोनेंट जहाँ पे हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन करना है. जैसे कि इनपुट में भी है, आउटपुट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट. सेम ही आउटपुट है, करेक्ट. सेम ही डेटाबेस है, कॉन्फ़िगरेशन लेकिन मुझे 2 कंपोनेंट में करना पड़ रहा है. ये रिपीटेटिव चीज़ है, राइट. दैट आई कैन डू इट इन 1 कंपोनेंट एंड रीयूज दैट इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स. मतलब यूज़ एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मतलब एक बार कनेक्शन क्रिएट करो जॉब के अंदर और वही कनेक्शन मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज़ करो. फ़िलहाल के लिए सिर्फ 2 जगह पे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, लाइक इनपुट एंड आउटपुट कंपोनेंट में, एक ही डेटाबेस के लिए. मान के चलो हमारा जॉब बहुत बड़ा है, and into that job we have around 15 components which are connecting to the same database, same Oracle database, let's say. So 15 time it's not a good idea to configure the same connection, right. So instead of that we can create a separate connection and we can use that.
Okay, for that we have a component T Oracle connection, right? This is again available for any other databases. अभी यहाँ पे हमने सर्च किया T Oracle के लिए, right? This can be available for any other databases. इस पर हमने डबल क्लिक किया, इसके सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है, ठीक है. Now this is available for any other databases as well. यहाँ पे मुझे डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है. हाउ? सी, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर सेम, राइट? डेटाबेस इज XE, यूज़र नेम इज सिस्टम, स्मॉल केस अपर केस दोनों चलेगा. पासवर्ड इज 1 2 3. Clicking on OK. So these are the database related configuration and it is done. You can pass the additional parameters if your database required to have these to connect with. Okay, अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई JDBC पैरामीटर्स की ज़रूरत है नहीं, ठीक है. अपना डेटाबेस ऐसा है कि इन सारे पैरामीटर्स से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है. सो दैट्स इट. नो एनी स्पेसिफिक data source needs to be given here. अभी अपना कनेक्शन कंपोनेंट रेडी है. दिस कनेक्शन कैन बी यूज्ड थ्रू आउट दिस जॉब. इस जॉब में कहीं पे भी कनेक्शन की ज़रूरत है, इस सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, यू कैन यूज़ फ्रॉम दिस कंपोनेंट. ओके, सो नाउ व्हेन आई गो टू दिस कंपोनेंट, दिस ऑप्शन इज़ फॉर व्हाट? यूज़ एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन. दिस इज़ एन कनेक्शन कंपोनेंट यू कैन यूज़ इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स हियर. अब इस कंपोनेंट में आता हूँ, इनपुट कंपोनेंट में. यहाँ पे मुझे पूछ रहा है यूज़ एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन. यस, आई वांटेड टू यूज़ द एग्जिस्टिंग कनेक्शन. जैसे ही मैंने इसको चेक किया, ये सारे प्रॉपर्टी चली गई बिकॉज दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. यूज़ एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन मतलब किसी और कंपोनेंट से मुझे कनेक्शन लेना है. किस कंपोनेंट से लेना है? TDB कनेक्शन 1. सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट, राइट? क्लिक ऑन दिस. So now this component is using the connection from this component, जो कि यहाँ पे हमने कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर लिया है. Similarly for output component as well, use an existing connection. Let me select which component I wanted to get the connection from. TDB connection 1. यहाँ से मुझे कनेक्शन लेना है, ठीक है. Control S. If I execute my job, will it properly execute or not? Let's see. It got executed properly, but it is, we are not sure ये properly execute होगा या नहीं हर केस में. For example, TDB connection took time to create the connection और उसके पहले by mistake ये जॉब अगर execute हो गया तो in that case the job will fail because this job using the connection from this component. So this component, the DB connection component, should and must be executed very first within this job. यहाँ पे दो सब जॉब्स हैं, one is this one and the next one is here. So इन दोनों में ये कंपोनेंट पहले एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, then only this component will be getting executed, otherwise we will face an error. So in that case, how we can tackle this situation where this component should be executed first and this aligned next subjob will be followed with that. So right click, trigger on subjob OK, मुझे इसको execute करना है. Okay, after completing of this job I wanted to execute this entire set. So right click on subjob OK. Let me delete this. Right click on subjob OK. You can do on component OK as well and on subjob OK as well. Okay, the difference between these two we will discuss in future sessions. As of now, you can use any one of them. This is, you can consider as a single component as well and you can consider this is as a sub job as well. तो इसको हम right click on sub job OK भी कर सकते हैं on component
ओके भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑन सब जॉब ओके मतलब क्या है, दिस सब जॉब वंस इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड देन गो एंड एग्जीक्यूट दिस फ्लो. So right click, trigger on sub job OK and click here. Then clear and run. See, this is got executed now. Okay. So we saw Oracle input, Oracle output, मतलब किसी भी डेटाबेस का इनपुट और आउटपुट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस से डेटा रीड कर सकते हैं और उस डेटाबेस में डेटा को हम राइट भी कर सकते हैं. ठीक है. Few of the options of output component we'll see slowly. Okay, so meanwhile we just wanted to cover few more components. T row generator, T sample row, T oracle output we already covered, right? T row generator, let's see. T row generator, T row generator. This component is used to generate the dummy data for testing purpose. If you wanted to generate some data, sample data, you can use this component. जितने कितने भी record आपको चाहिए, that you can generate. Once you double click on this, you will get one editor for what? For creating the schema of your T row generator. आपको जितने कॉलम चाहिए उतने आप बना सकते हो. लेट मी क्रिएट 3. ओके, आई जस्ट डू इट फुल स्क्रीन. मुझे चाहिए आईडी, नेम और एंड एड्रेस. आईडी टाइप क्या चाहिए मुझे, इंटीजर, नेम स्ट्रिंग, एड्रेस आल्सो स्ट्रिंग. ओके, टाइप तो हमने डिसाइड कर लिया. आई वांट फंक्शंस. हियर इनटू दिस फंक्शन Talend gave its built-in functions to generate IDs. It means IDs नहीं, specifically आपको कैसे ID को generate करना है, that function you can choose it from here. अब as it is a integer format, right? So int और number format का function हमें ढूंढना चाहिए, right? So numeric random int, you can use numeric dot random int, which is here onto the cursor. You can see you can use numeric dot sequence as well. Random मतलब क्या है, कोई भी random number मिलेगा, integer number. It can be 10, 15, 3, 4, 100, whatever. Sequence मतलब one after another, 1, 2, 3, 4, 5. I want sequence, right? ऐसे Talend ने बहुत सारे functions दिए, you can use according to your need. Name I want, let's see. जब मैं इसको string consider किया हूँ तो it will give me string related functions here. Okay, so Talend dot data generator dot get first name, Talend data generator dot get first name, get last name, get US city, get US state, मतलब इसमें mostly US का data dump किया हुआ है. Okay, that you can use it. I want first name, Talend data generator dot first name. Okay, address I wanted to get the address. City, Talend data generator dot get city. I just want a city in the address. Okay, so this is the setup I have given: ID, name and address. So I can delete any column, I can arrange the order of the columns up and down, I can copy it, I can do many stuff here. Number of rows for row generator 100, whatever number you can give, those many number of records it will generate. Okay, you can take the preview as well. 10 record का मुझे preview चाहिए, you can change the number as well. Click on preview. See,
This is how it has generated. Let me click on OK. मैं ये डेटाबेस में भी लोड कर सकता हूँ, फाइल में भी लोड कर सकता हूँ, कहाँ पे भी लोड कर सकता हूँ. आई जस्ट वांटेड टू डिस्प्ले इट ऑन टू द कंसोल. टी लॉग रो से मैं डेटा को कंसोल पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ. राइट क्लिक मेन, or you can click here and connect directly. Go to run tab. Let me first sync columns. Go to run tab and run the job. It should generate 100 records here. Let me show you all the records. ID, name and address. ID sequence number उसने generate किया है and name, okay, address, the US city names it has added here. You can generate any number of records like 10 lakh, 50 lakh, 1 crore, whatever number of records you want, you can generate according to your need. So this is how the T row generator works. Now you can use your own logic to generate the different columns, like state use करना है, last name use करना है, जो कुछ भी डेटा आपको जनरेट करना है, that you can play around with these. ठीक है. Let's move to the next component. I think we have to stop here.